Good afternoon, students. Is my screen visible to you? Yes, ma'am. Yes, I'm Good available. afternoon. And am I audible? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, thank Yes, you. ma'am. Thank you, Vikas and Harsh. I hope you all are doing well. So we start with the remaining topics for energy and environmental engineering. Previous lectures में हम लोगों ने देखा है कि Indian energy requirements, world energy requirements कैसी हैं. And we've also seen different forms of energy like major electricity production कैसे किया जाता है using nuclear energy. We've also seen hydroelectric power plants, some innovative turbines हम लोगों ने देखे, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस भी हम लोगों ने देखा जिसमें ओशन की हीट यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है. We've seen how waves can be used for generation of electricity, and then we've also seen कि tides कैसे यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए. We are moving forward with the other form of energy, that is geothermal energy. So anybody knows what does it mean by geothermal energy? Ma'am, geothermal energy is energy released from inside the earth. Exactly. Uh, Very good. Very good, Vikas. बेसिकली अर्थ के अंदर जो हीट रहती है उसे हम यूज कर रहे हैं और दैट इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी. जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स द हीट. So उसे हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. That is done in different power plants. Those are called as geothermal power plants. So we'll see basically how it is used first primarily for electricity production, and then we will see how it can also be used for heating and cooling purposes. So is the voice coming? yes, ma'am. You may have relaxed in a natural hot springs pool, or seen the old faithful geyser blasting hot water into the air in Yellowstone National Park. But have you ever thought of where all that heat comes from? Well, it comes from deep beneath the surface of the Earth, and it's called geothermal energy. बेसिकली जो अर्थ के सरफेस के अंदर से जो हीट जनरेट होती है, हीट क्यों जनरेट हो रही है क्योंकि अर्थ के अंदर जो कोर है, and that core inside the earth there is lot of radioactive reactions going on similar to the sun. सेम एग्जैक्टली नहीं है लेकिन सिमिलर है. सो वैसे ही रिएक्शंस कुछ हो रहे हैं अर्थ के अंदर जिसकी वजह से वोल्केनोज डेवलप होते हैं, एंड जो भी हीट जनरेट होती है वाटर जब उस हीट के कॉन्टैक्ट में आएगा that will lead to generation of this hot water. So hot water can be used in the form of springs जो automatically gush up करते हैं above the earth's surface, and the second we can utilize this heat for electricity generation also. So basically जो energy earth के अंदर stored है in the form of heat, that is the geothermal energy. And we can use it to generate clean, renewable electricity. This जो भी हम इसे यूज़ करेंगे, जो भी जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल मीन्स ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाता है वो, एंड जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा उसका रीजनरेशन की कैपेसिटी है. Okay, here's how geothermal works. Heat from the Earth's crust warms water that is seeped into जो भी वाटर आ रहा है हमारे अर्थ में, जब रेन आ रहा है, रेन इज गेटिंग पर्कुलेटेड. पर्कुलेट होने के बाद ये इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर. तो जो ग्राउंड में वाटर पर्कुलेट होता है वो अल्टीमेटली इस हॉट जोन के कांटेक्ट में आता है एट सम प्लेसेस. दैट लीड्स टू जनरेशन ऑफ दिस हॉट वाटर. underground reservoirs. In अब जब वाटर इस हीट के कांटेक्ट में आएगा, then in that case it will lead to production of this hot water, and that can be used for electricity production. some places, when water becomes hot enough,
It can break through the Earth's surface as steam or सर्टेन प्लेसेस जहाँ पर हीट ज़्यादा हो जाती है वाटर की, वो इस तरह से क्रैक्स फॉर्म करता है अर्थ में और फिर वो एस्केप आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. hot water. This usually happens where the Earth's crust or plates meet and shift. ये वहाँ पर ज़्यादा एक्सेसिबल होता है जहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ अर्थ प्लेट्स हो. Taking advantage of geothermal energy was limited to areas where hot water अर्लियर हम जियोथर्मल एनर्जी से वहीं पे यूज़ कर सकते थे जहाँ पे इस तरह के हॉट वाटर गीजर्स एंड स्प्रिंग्स अवेलेबल होते थे नेचुरल एरियाज में, जहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टीम आता है, वहाँ पे ही यूज़ किए जा रहे थे. flowed near the surface. But as geothermal technologies advance, we can leverage even more of these natural, renewable energy sources. But because of the advancement in technology, there is possibility of utilizing this geothermal energy in a lot more areas. Engineers have developed a few different ways to produce power from geothermal wells drilled into the ground. Have a look at this. It's a dry steam So there are basically three techniques जिससे हम electricity generate कर सकते हैं. One is called the dry steam. As the name suggests, dry steam मतलब जो steam without moisture आ रही है to on the earth's surface, that is called the dry steam. The second technique is called the flash steam. Flash steam मतलब उसमें कुछ amount of moisture रहेगा, water रहेगा जो अर्थ के ऊपर आएगा and it appears in the form of a flash. That is flash steam power plant. The third is a binary power plant. Binary जिसमें कुछ dry steam रहेगा, कुछ flash steam रहेगा, दोनों का combination यूज किया जाएगा electricity generation के लिए. thermal power plant, and it's the most common type of geothermal technology used today. Underground steam flows directly to a turbine to drive a generator that produces electricity. Pretty straightforward. Another geothermal So what is happening over here? There is one pipe. एक ही पाइप दिख रहा है आप लोगों को. इस पाइप में क्या कर रहे हैं? We are extracting hot water और steam जो भी available रहेगा. Most commonly dry So what will happen? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो पाइप्स हैं, एक रेड कलर का दिख रहा होगा आपको एंड दूसरा ब्लू कलर का दिख रहा होगा. सो रेड पाइप क्या कर रहा है? जो भी हॉट स्टीम या वाटर अवेलेबल है अंडर द अर्थ सरफेस, वहाँ पे हम ड्रिल करके ये पाइप भेज देते हैं. उससे ये हॉट वाटर या स्टीम एक्सट्रैक्ट कर रहा है. इट इज़ गोइंग टू स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर क्या इट इज़ converted into a high pressure steam. जो प्रेशर रहता है स्टीम का वो बढ़ा दिया जाता है and then this is connected to turbines. टर्बाइंस जो रहती है ये टर्बाइंस रोटेट करेंगी जिससे जनरेटर्स कनेक्टेड होंगे एंड जनरेटर्स की मूवमेंट से देन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. एंड इन दिस प्रोसेस जो भी वाटर रहेगा उसको हम दोबारा कंडेंस करेंगे. दिस इज अ कूलिंग टावर. कूलिंग टावर में क्या किया जाता है? वाटर की हीट एक्सेस जो हीट रहेगी उसको वापस डिसिपेट किया जाता है. इट इज़ कूल डाउन एंड देन अगेन दैट वाटर इज पम्प्ड बैक इनटू द ग्राउंड. रीज़न बीइंग कि हमें यहाँ पर जो वाटर अगर हम एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो लैंड है उसका सब्सिडेंस हो सकता है, वो अंदर धंस सकता है. उसे प्रिवेंट करने के लिए कीप re-emitting this water back into the well. thermal technology is called a flash steam power plant. सेकेंड मैंने बोला था आपको the other type is a flash steam power plant. फ्लैश स्टीम पावर प्लांट में बेसिकली जो हॉट वाटर रहता है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है,
जब हॉट वाटर अंडरग्राउंड सरफेस से ऊपर आता है तो उस केस में क्या होगा, वो प्रेशर चेंज हो रहा है, अंडर द अर्थ ज़्यादा प्रेशर में है, जैसे ही वो ऊपर आता है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक फ्लैश के फॉर्म में अपीयर होता है। A pump pushes hot fluid into a tank at the surface, where it cools. As it cools, the fluid flashes, or quickly turns into vapor. The vapor then drives a turbine and powers. So as I discussed, जो भी steam रहेगी that rotates this turbine. This turbine is further attached to electromagnets, और electromagnets move करते हैं तो electricity generate होता है। The generator. A binary cycle plant works differently. It uses two types of fluid. Hot fluid from underground heats a second fluid, called a heat transfer fluid. So binary में क्या हो रहा है कि जो hot fluid आ रहा है, जो basically hot water आ रहा है underground surface से, वो एक further liquid को heat up कर रहा है जो relatively low boiling point पे होगा। Giant heat exchanger. The second fluid has a much lower boiling point than the first fluid. So what happens, क्योंकि उसका boiling point low है तो ये जो hot water रहता है वो उसको easily vaporize कर देता है, और जो vapor रहेगा then that is used for rotation of these turbines. And so it flashes into vapor at a lower temperature. When the second fluid flashes, it spins a turbine that drives a generator. The environmental benefits of this clean, round-the-clock, renewable energy source are substantial. Low emissions, small physical footprint. So first major advantage है कि emissions यहाँ पे reduce हो जा रहे हैं as compared to coal, oil and natural gas power plants, जहाँ पर fuels बहुत ज़्यादा लगते हैं, and because of burning of fuels carbon dioxide emit होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कोई fuel use नहीं कर रहे हैं, we just using that hot water or steam, because of which emissions हम greatly reduce कर सकते हैं, then footprint भी reduce हो जाता है इस तरह के power plant and minimal environmental impact. and environment में भी impacts reduce हो जाते हैं। The few byproducts that can come up are often re-injected underground. But certain cases में there might be some byproducts जो हम water को condense करके दोबारा re-inject कर रहे हैं underground. Another benefit is कि जो हम water re-inject कर रहे हैं उसे inject करने से पहले हम उसमें से कुछ minerals extract कर सकते हैं. That can be used for different processes. Then that is another advantage. Geothermal energy can also help recycle wastewater. In California, wastewater from the city of Santa Rosa is injected into the ground to generate more geothermal energy. So another advantage जो कैलिफोर्निया में यूज़ किया जा रहा है, जो वेस्ट वाटर आता है ट्रीट करने के बाद उसे अंडरग्राउंड में री-इंजेक्ट कर देते हैं, and then that can be used for generation of electricity. So one more process which can be used. Some plants do produce solid waste, but that solid waste may contain minerals that we can remove. I told you certain cases में हम minerals extract कर सकते हैं, अगर solid waste generate हो रहा है तो उसमें से sulfur recover कर सकते हैं, then that sulfur can be used for different processes जहाँ भी required रहता है। And sell, which lowers the cost of this energy source. So it can be useful for two purposes. One, electricity to generate हो ही रहा है. The other, it can also be used for extraction of minerals. One second. The U.S. Geological Survey estimates that untapped geothermal resources in the United States, if developed, could supply the equivalent of 10% of today's energy needs and cut our dependence on fossil fuels. As already observed, US में ज़्यादा developed है ये particular form of energy जिसे use किया जा रहा है to supply the required power. In fact, electricity generated by geothermal energy already provides about 60% of the power along the Northern California.
सो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया का 60% पावर जो रहता है वो इस तरह के जियोथर्मल पावर प्लांट से प्रोवाइड किया जा रहा है। California coast, from the Golden Gate Bridge to the Oregon state line. Geothermal energy, helping to push America toward energy independence and a clean, renewable way to meet our growing energy demands. So that was regarding how it can be used into a power plant, जहाँ पर different types of power plants हमने discuss किए. One was the dry steam, the other was flash steam, and third was the binary power plants. So a lot of videos are available in which you can go through the how this geothermal power plant works. If you want, I can show it to you. You want to see it? Yes, sir. Okay, let's see how this particular power plant works. This is an animation, but let's go through this first. I already told you geo means earth and thermal means the heat that is available into the earth that is used. So heat कहाँ से आ रही है? यहाँ पे जो कोर है अर्थ में वहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है. This particular heat is किस डायरेक्शन में मूव करता है हीट फ्रॉम इनर टू द आउटर सरफेस. एंड वी नो दीज फैक्ट्स कि जो कोर रहता है वो एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर रहता है एज कम्पेयर टू द सरफेस. द टेम्परेचर इज हाई इन द कोर एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी रीच द सरफेस. बट जो भी वाटर ग्राउंड वाटर आएगा इस पर्टिकुलर एरिया कॉन्टैक्ट में दैट विल गेट हीटेड अप बिकॉज ऑफ दिस ट्रेमेंडस हीट. यूजुअली जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है वहाँ पर इजीली ये जो हॉट वाटर या स्टीम रहता है वो एस्केप आउट कर सकते हैं where this can be easily utilized. That's a basic concept. We want to discuss these things a little bit further. Regions जो रहते हैं these are called as the ring of fire जहाँ पर ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस की प्रोबेबिलिटी रहती है वहाँ पर इजीली हम इस तरह की जो स्टीम रिलीज हो रही है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं. So specifically this ring of fire can be more exploited for these geothermal resources. First geothermal power plant was built in Ardello, Italy, and later on there were other places जहाँ पे बनाया गया है.
provide you the details of this particular technology. We'll see an animation regarding working of this geothermal power plant. Welcome to one of Cal Energy's geothermal power plants. Unlike other power plants that rely on coal or other fossil fuels to create electricity for homes and businesses, geothermal power plants use superheated fluids from the Earth's geothermal resources to generate electricity. The natural heat of the Earth creates geothermal resources. This heat comes from molten rock called magma, located at the Earth's core, deep below the geothermal resource. Over thousands of years, rainwater seeps through cracks in the Earth's surface and collects in underground reservoirs. The magma heats the water until it becomes a superheated fluid. To reach the superheated fluid, wells are drilled 5,000 to 10,000 feet below the surface of the Earth. These wells, called production wells, bring the superheated fluid to the Earth's surface, where it can be used to generate electricity for homes and businesses. This geothermal power plant uses crystallizer reactor clarifier technology, a process that turns the geothermal superheated fluid into steam while removing solids from it. The steam is used to drive a turbine and generate electricity. All remaining geothermal fluids are injected back into the reservoir for reuse. Under its own pressure, superheated fluid from the geothermal resource flows naturally to the surface through production wells. As the liquid flows toward the surface, the pressure decreases, causing a small portion of the fluid still within the well Okay, there's some connectivity issue. surface pipelines and into a wellhead separator. Inside the separator, the pressure of the superheated fluid is reduced. This causes a large amount of the superheated fluid to rapidly vaporize and flash into high pressure. So basically क्या कर रहे हैं, we're just separating the steam. We're not utilizing the water. We're just using this steam from hot water. जैसे पाइप से वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं या ऊपर आता है, इट फ्लैशेस एंड देन प्रेशर रिड्यूस करने की वजह से क्या होगा, ये स्टीम सेपरेट हो जाता है एंड दिस स्टीम इज देन टेकन टू टर्बाइंस एंड फर्दर प्रोसेसेस फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Steam. The geothermal fluid that is not flashed into steam in the wellhead separator flows to a second vessel called a standard pressure crystallizer. Again, some amount of steam is extracted in the standard pressure crystallizer. जिसमें this is again used for production of electricity and turbine movement. Where an additional amount of standard pressure steam is produced. The flash process continues in the low pressure crystallizer. The remaining fluid is again flashed, this time at a lower pressure to produce low pressure steam. So three types of steam: standard, high and low pressure. All these are used for directed towards the turbine. All of the low pressure, standard pressure, and high pressure steam is delivered to a turbine. The fluid that is not flashed into steam flows into the reactor clarifier system and is then returned to the geothermal reservoir through injection wells. So we have three major components. One is a production well, जहाँ से water extract किए जाते हैं. Then there are steam separators, जहाँ पे high pressure, standard pressure, and low pressure steam separate की जाती हैं. The third component is the injection well. So if you are asked, you have to give a block diagram. Block diagram बना के आपको बताना पड़ेगा production well से water extract किया जाता है with the help of arrows. Then you
move that particular water to the steam separators. Steam separators से फिर दोबारा इंजेक्शन वेल तक जाता है, इंजेक्शन वेल से वापस वाटर को इंजेक्ट कर दिया जाता है अंडर द अर्थ सरफेस. Turbines are the primary piece of equipment used to transform geothermal energy into mechanical energy. Pressurized steam created from the geothermal superheated fluid flows through pipelines to large steam turbines. The force and energy in the steam is used to spin the turbine blades. The turbines turn a shaft directly connected to an electrical generator. An electrical charge is created when magnets rotate within the generator. Large copper bars carry the electrical charge to a step-up transformer outside the This plant. particular process I've already told you कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, why it requires a step up charge. ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर दी थी, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कैसे ट्रांसमिशन लाइन से पहुंचाई जाती है होम्स में. Within the transformer, the voltage is increased before the power is sent to the power lines that carry it to homes and businesses. Geothermal energy is a sustainable resource because with proper management, a geothermal resource can remain a renewable source of energy. Water trapped deep within the earth will naturally replace the superheated fluid that is drawn from the geothermal resource through surface wells. However, it is possible to deplete the geothermal resource by removing fluid faster than it can be naturally replaced. To help prevent this, the steam used in the geothermal power plant passes through a condenser that turns it back into fluid. So because we do not want any disturbance under the earth surface, तो इसलिए जो स्टीम रहती है उसको दोबारा कंडेंस किया जाता है एंड इसी प्रोसेस में इस स्टीम में से कुछ मिनरल्स जो रहते हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. This stage, it's possible to recover minerals from the geothermal fluid before it's injected back into the earth. This condensed fluid, along with the fluid that did not flash to steam, is injected back into the underground reservoir. Magma naturally reheats the fluid so it can be used again. So this was regarding the working of the geothermal power plant in the example. The other thing I wanted to share was that how geothermal energy can be used for हीटिंग एंड कूलिंग पर्पसेस. एक तो हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है. दूसरा, हम जियोथर्मल एनर्जी को हीटिंग और कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. किसकी हीटिंग कूलिंग पर्पसेस के लिए? हाउस के या किसी बिल्डिंग के अंदर जो हीटिंग और कूलिंग रहती है वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जियोथर्मल एनर्जी. क्यों? क्योंकि ये सस्टेनेबल रिसोर्स है एज कम्पेयर टू एन एयर कंडीशनर. अगर हम एयर कंडीशनर की बात करें, डेफिनेटली हम लोगों का जो वर्किंग कैपेसिटी रहती है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहती है. हम बहुत ज़्यादा गर्मी में भी काम नहीं कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा ठंड में भी काम नहीं कर सकते हैं. तो ह्यूमन की जो एफिशिएंसी रहती है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहती है. अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहेगा टेम्परेचर का तो वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट अपॉन वर्क. बहुत ठंड में हमें थोड़ा वार्मथ चाहिए रहती है, गर्मी चाहिए रहती है, और गर्मियों में हमें ठंडक चाहिए रहती है. दिस पर्पस इज done provided by one is air conditioners, the other is heaters. Now air conditioners और heaters की प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा लगती हैं. दूसरा, दे ऑल्सो हैव सर्टेन एमिशंस जिसे हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग दिस जियोथर्मल एनर्जी. So geothermal energy जब हम यूज़ करते हैं for heating or cooling purposes of homes and businesses, then in that case it becomes a sustainable resource. Sustainable इसलिए क्योंकि we are not exploiting any of the things. हम केवल जो inner environment है उसे heat और cool करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. So let's see how it can work. Geothermal energy options. How it works. Geothermal heating and cooling works by tapping into the constant heat source that is found 5. So what is the basic concept? Concept ये है कि जब हम under the earth surface जाते हैं, say around 5 feet to 20 feet के range में, not too deep, but on an average depth, तब हम ये
द फैक्ट इज कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएशन कैसे नहीं होता है, जैसे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर जब समर रहेगा तो यहाँ पर हॉट विंड्स ब्लो करेंगे, जब विंटर रहेगा तब यहाँ पे कोल्ड विंड्स ब्लो करेंगी। सो दिस एटमॉस्फेयर हैज़ चेंजिंग टेम्परेचर्स विद रिस्पेक्ट टू सीजन्स। बट यहीं पर अंडर द अर्थ सर्फेस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है टेम्परेचर का, रिलेटिवली इट इज़ कांस्टेंट। तो गर्मी में क्या होगा कि एटमॉस्फेयर गर्म रहेगा, लेकिन अर्थ के अंदर क्या रहेगा, गर्म रहेगा कि ठंडा? Moderate. ओके, रिलेटिवली राइट, माय क्वेश्चन वाज विंटर में अर्थ के ऊपर यहाँ पे ठंडे कोल्ड विंड्स ब्लो करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या कैसा रहेगा, हाउ डू यू अज्यूम, कैसा रहेगा यहाँ पर, ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा? रिलेटिवली वार्म रहेगा। सो रिवर्स हो रहा है, जब यहाँ पे ठंडा है तब यहाँ पे वार्म अपीयर करता है, और जब यहाँ पे वार्म है तब यहाँ पर कोल्ड अपीयर करता है। सो दिस रिलेटिव टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता है। उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं होम्स के हीटिंग और कूलिंग पर्पसेस के लिए। 5 feet below the Earth's surface. In the Northeast, this temperature is approximately 53 degrees. Direct exchange geothermal, or DX, outperforms water source geothermal systems by 25% and is the most efficient system on the market. That's because DX does not require electrical circulators, A lot of energy is not required by these systems, जिसकी वजह से ये सस्टेनेबल फॉर्म्स में आ जाता है। which use additional electricity. DX only requires one heat transfer, and DX utilizes copper piping, which has superior heat transfer properties instead of the plastic tubing used in water-based systems. Our equipment and installation are what separates us from everyone else. बेसिक आइडिया क्या है कि यहाँ पे जो भी होम कंस्ट्रक्टेड है उसके नीचे एक एरिया बना दी जाती है जहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड किया जा रहा है। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, हीट कहाँ से फ्लो होती है, फ्रॉम हॉटर टू कोल्ड रीजन। तो सिमिलरली हीट एक्सचेंजर क्या कर रहा है, जहाँ पे हॉट रहेगा वहाँ से हीट अब्जॉर्ब करेगा और कोल्ड में ट्रांसमिट कर देगा। और यहाँ पे क्या, दे हैव ड्रिल्ड सर्टेन पाइप्स, पाइप्स जो बेसिकली कॉपर पाइप्स होते हैं, दे आर ड्रिल्ड अंडरग्राउंड। सो इससे क्या होगा, और इस कॉपर पाइप के अंदर एक एंटी फ्रीजिंग लिक्विड सर्कुलेट कर दिया जाता है। व्हाट डज इट डू, जब भी ये लिक्विड सर्कुलेट होगा इस पाइप में, तो अगर लिक्विड कोल्ड है तो यहाँ की हीट अब्जॉर्ब करके हॉट हो जाएगा, इट विल फ्लो टू दिस पर्टिकुलर एरिया, अपनी हीट एमिट करेगा, एंड दैट हीट कैन बी यूज्ड फॉर वार्मिंग अप दिस हाउस इन केस ऑफ विंटर। जब भी विंटर सीजन रहेगा, ये हॉट वाटर जो रहेगा या जो भी लिक्विड रहेगा उससे हीट अब्जॉर्ब करके होम्स में एमिट कर दी जाएगी, और कोल्ड फिर सर्कुलेट होता रहेगा इस पाइप में। जब समर रहेगा तब रिवर्स हो जाएगा, तब यहाँ की हीट हम अब्जॉर्ब करके यहाँ पर एमिट कर देंगे पाइप्स में, और जो वाटर रहेगा अपनी हीट फिर सराउंडिंग एरिया में एमिट कर देगा, जिससे कि वो कोल्ड हो जाएगा। सो इट विल डू द रिवर्स इन केस ऑफ समर एंड विंटर। We drill our boreholes to a depth of 100 feet. When drilling to 100 feet, we are very likely to encounter moist soil and/or rock conditions, which are preferred for conductivity. Each borehole is drilled vertically and is spaced 7 feet apart. This prevents the phenomenon of ground loop in
Alright, ताकि ये properly balance रह सके, there should be a distance of at least 7 feet between the holes, जहाँ से pipes pass किए जाते हैं. Envision each borehole as a 7-foot diameter cylinder that uses this area to gather the Earth's energy. When ground space is a concern, a teepee style or slant configuration can be used to reduce the area needed for drilling. And if the area is not much available, तो इस तरह का slanting configuration cone type का भी installation किया जा सकता है. Notice the reduced surface area needed at the top of the boreholes. Here's a simplified version of how a heat pump works when heating your home. So this is basically a heat pump जो work करेगा इसके साथ. All heat pumps have a compressor and an expansion valve that manipulate refrigerant. A refrigerant has two phases, gaseous and liquid. Refrigerant works on the basic principle that if you raise the pressure, you raise the temperature. If you lower the pressure, you lower the temperature. This is all done with a compressor and an expansion valve. Compressor और expansion valves basically pressure regulate करते हैं, जिससे heat जो रहती है वो vary कर सकती है. Now, let's say the refrigerant starts its journey in its gaseous state and enters the compressor at 30 degrees. The compressor compresses the gas, which increases. तो initially जो liquid है it is at 30 degrees, उसे compress कर दिया जाता है. compress करने से क्या होगा कि temperature बढ़ जाएगा. The pressure and raises the temperature to 160 degrees. The refrigerant travels to a coil where a fan blows across it. So once it reaches this region, तो ये hot air जो रहेगा fan blow करेगा, उससे जो heat रहेगी वो high से low में transmit हो जाएगी. The air blowing across this coil absorbs the heat energy and distributes it throughout the home. As the refrigerant leaves the coil, it condenses back to its liquid state and moves toward the expansion valve at 85 degrees. तो वहाँ पे heat emit हो गई जो use की जा रही है house को warm up करने के लिए. When this liquid comes back, then उसका temperature हमें और भी घटाना रहता है. That can be done with this help of this expansion valve. The expansion valve is basically like a dam with a small hole. When the refrigerant passes through the expansion valve, the pressure rapidly decreases and the temperature falls to 20 degrees. It then moves toward the TXV valves. These valves control the amount of refrigerant distributed to each ground loop. The refrigerant is then piped out to the well field and down the vertical boreholes where it begins its transformation back to a gas. So इस तरह से पूरी cycle जब वो water circulate करता है back under the earth's surface, this cold water absorbs heat from this earth और फिर वो hot होकर यहाँ पर आता है. compressor से उसकी heat बढ़ा दी जाती है जिससे warm air जो रहेगी it works like a heater. तो इन केस ऑफ समर जो रहेगा रिवर्स हो जाएगा, जो इनर एनवायरनमेंट से जो हीट है उसे अब्जॉर्ब कर दी जाएगी और फिर यहाँ पे एमिट की जाएगी. आई टोल्ड यू द बेसिक प्रिंसिपल है कि अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट के हिसाब से टेम्परेचर वेरी होगा, लेकिन अर्थ के अंदर ऑलमोस्ट स्टेबल टेम्परेचर रहता है. दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द houses and its inner environment. This is done with the help of geothermal heating and cooling systems. It transitions back to its gaseous state. It absorbs heat energy from the earth and travels back to the compressor. So इसमें basic advantage क्या रहेगा कि this is a one time installation. एक बार install करने के बाद 20 years तक you don't need to look back at it. Simple, very small amount of electricity is required for circulating this liquid. Other than that, and working of this fan and compression. Other than that, और बहुत ज़्यादा electricity की requirement नहीं है as compared to the air conditioners and heaters. Because of which this becomes a relatively sustainable resource, and साथ ही में हम electricity का consumption भी reduce कर सकते हैं to approximately 75%.
अगर हम इस तरह के जियोथर्मल सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं, देन आर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रादर जो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज रहेगा वो 75% घटाया जा सकता है एज कम्पेयर टू एयर कंडीशनर्स एंड हीटर्स. सो दैट इज़ द बेसिक एडवांटेज एंड केवल वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है. Other than that, it doesn't require a lot of maintenance. So this was regarding geothermal for heating and cooling purposes. आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं कि जियोथर्मल एनर्जी को हम कैसे यूज़ करेंगे पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, साथ ही में उसको हीटिंग और कूलिंग पर्पसेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो बेनिफिट्स देख लेते हैं हम इसके, तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. What if there was a way to heat your home in winter, cool it in summer, and provide abundant hot water all year round, all while cutting your utility bills by how? By installing a Climate Master geothermal central heating and air conditioning system in your home. सो Here's how it ड्यूल है ये, हीटिंग एज वेल एज एयर कंडीशनिंग दोनों पर्पसेस सॉल्व कर रहा है. अलॉन्ग विद दैट सर्टेन केसेस में यू कैन आल्सो हैव हॉट वाटर्स. works. Wherever you live, the temperature beneath your home remains constant, regardless of the season. Just a few feet So I told you कि यही बेसिक कंसेप्ट है कि अंडरग्राउंड जो टेम्परेचर रहता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है. down, the Earth is a consistent 55 degrees, summer or winter. Whatever the season is, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होगा. Climate Master geothermal heat pump systems harness this stable underground temperature to provide heating, cooling, and hot water at remarkably high
there's some issue with this today. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? To access this As already discussed, 80% तक हम reduce कर सकते हैं electricity requirement by using these types of systems. These are called heat pump systems. stable underground temperature, a geothermal heat pump is connected to a series of underground loop pipes. These loop pipes are made from an extremely strong and long-lasting material. Water, usually mixed with an environment, Water usually mixed with an anti-freezing substance circulate किया जाता है इन pipes में. environmentally safe antifreeze solution is pumped through this loop pipe system. In summer, the heat pump takes heat from the air in your home, transfers it to the underground. समय के टाइम पर यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे जो घर के अंदर की हीट रहेगी वो उसे absorb करके और यहाँ पर pipes emit कर देंगे into the soil. Loop system, which then radiates the heat away into the cool earth. Now cooled to a comfortable temperature, the air is circulated through your home using a Then cold air is circulated into a duct system. with the In help of these ducts. winter, the system is reversed. विंटर में रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे हॉट एरिया रहती है जिसकी वजह से हम वाटर में जो हीट रहती है वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा और इंस्टेड ऑफ absorbing the heat from this house it emits that warm air into the house जिससे कि heating process होगी. Heat is extracted from the ground using the same loop system. In the heat pump, the heat from the underground loop is compressed to a much higher temperature and used to warm the air in your home. Since a geothermal system uses an earth loop to provide your home with heat in the winter, there is no need to burn any fossil fuel for heating. No flame, no carbon monoxide, and environmentally friendly. Geothermal systems are the smart way to heat and cool your home. Let's compare a high-efficiency gas furnace to a geothermal system for heating your home. A high-efficiency gas furnace will give you less than 0.96 units of heat for each unit of gas burned. When we compare a gas furnace that relatively heats up the houses और geothermal system से comparison करते हैं तो गैस फर्नेस में 1 यूनिट गैस बर्न करने के बाद 0.96 यूनिट्स ऑफ हीट जनरेट करता है. In contrast, a geothermal system gives you up to 5 units of heat for each So as compared to this, geothermal system 5 units of heat generate करता है for each unit of electricity. unit of electricity used. How can that be? A furnace makes heat by burning fossil fuel. A geothermal system doesn't make its own heat. It simply collects heat from the यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कोई भी फॉसिल फ्यूल बर्न करके फिर हीट जनरेट की जा रही है जबकि यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं हो रहा है. वी सिंपली grabbing that heat from the earth's underground earth and moves it to your home. Now let's compare a geothermal heating and cooling system to an air source heat pump for cooling. When it's hot outside, an air source heat pump takes heat from your home and moves it to the outside air. एयर सोर्स जो हीटर्स रहते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिंपली एयर जो रहेगी उसको सर्कुलेट करते हैं, जो सराउंडिंग एयर है उसी को ऑब्जॉर्ब करके हीट करके फिर एमिट करते हैं. As the outside air becomes warmer in summer, it becomes harder and harder for the system to dump heat from your home into the already hot outside air. Because of this, when cooling a home with an air source heat pump, the system becomes least efficient when it needs to be most. एयर सोर्स हीट पंप जो रहते हैं they can only be used for heating purposes but they cannot be used for cooling purposes because they ultimately depend on the surrounding air. जो हमारे surrounding air है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा. Efficient. A geothermal heat pump system doesn't have this problem. A geothermal system exchanges the heat in your home with a cooler ground using its underground loop system. It simply doesn't have to deal with high outside air temperatures the way an air source heat pump does. Add to this the fact that a geothermal system is installed safely inside your home with the loop buried underground. Unlike an air source heat So I've already seen geothermal के खूब सारे advantages होते हैं as compared to furnace and air source heaters.
जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट तो रिड्यूस हो ही जाती है, साथ ही में वो एफिशिएंट भी हो जाता है, एंड परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो don't need to worry a lot. There is no outdoor equipment exposed to the elements or the risk of vandalism. Let's take a look at geothermal loop systems. There are So I'll skip this section an because open loop system can be installed. we have already seen the Use the basic large concept. volumes of hot water a geothermal system can produce for radiant underfloor heating, or even for snow and ice melt under your walk installation. And utilities also offer incentives for installing a geothermal system. तो बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि परफॉर्मेंस वाइज इट इज़ गुड, एनर्जी सेविंग्स हो सकती है। थर्ड, वन टाइम इंस्टॉलेशन होता है जिसके कारण फिर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता है। दैट इज़ वाई जियोथर्मल सिस्टम्स अगर हम कंपेयर करें विद द रेगुलर फर्नेस एंड एयर सॉर्ट ऑफ हीटर्स, देन डेफिनेटली दे आर मच मोर एफिशिएंट, साथ ही में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं बिकॉज एमिशंस भी रिड्यूस हो जाते हैं। So that was regarding geothermal energy. Let's move to the other topic, that is the solar energy. I will try to move through this quickly ताकि हमारे टाइम में ही है पर्टिकुलर टॉपिक कम्प्लीटली। So coming to the other topic, energy, we have already covered these topics, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देख लिया हम लोगों ने, इंडियन एंड वर्ल्ड सिनेरियोज देख लिए, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वी हैव सीन अ केस स्टडी ऑफ चेरनोबिल डिजास्टर, वी हैव सीन हाउ हाइड्रो पावर कैन बी यूज्ड फॉर electricity production and power plants. We've seen turbines, innovative turbines, ocean thermal energy conversion device देख लिया हम लोगों ने, tidal and wave power देख लिया, and we have seen geothermal energy for electricity production and heating and cooling systems जो हम लोगों ने अभी देखा आज। To the other topic, that is solar energy. सन की एनर्जी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है इन इंडिया। सन इज बेसिकली अ फ्यूजन रिएक्टर जहाँ पे खूब सारा फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। फ्यूजन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड क्या होता है, द कंबाइनिंग ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियर टू बिकम फॉर अ हेवियर न्यूक्लियस इज फ्यूजन। इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है इनटू द सन्स एरिया। नाउ दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ रेडिएशन, जो रेडिएशंस डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है जिसे हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम सोलर एनर्जी कह रहे हैं। सोलर एनर्जी जो आ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज ऑफ द पावर ऑफ 10 टू द पावर 17 वाट्स, और अगर हम उसे अच्छी तरह से टैप कर लें, अगर हम इस पर्टिकुलर एनर्जी जो सोलर रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है उसे यूटिलाइज करें, देन वी कैन सफिशिएंटली प्रोवाइड फॉर आवर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज द चैलेंज, हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये चैलेंज होता है कि हमें एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इनको यूजफुल करने के लिए, because we need a lot of area, we need a lot of investment. That is the basic challenge which is coming with these renewable forms of energy. Now solar energy is coming in the form of different radiations, gamma rays, x-rays, UV, infrared, microwave and long wave radio, इस तरह से various frequency की अवेलेबल है हमें। उसमें से एक होता है विजिबल जिसे हम अपनी आईज से देख सकते हैं, दैट वेरीज फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर्स। सो बेसिकली जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं उसे हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं फॉर different purposes. Solar energy can be basically converted into three forms. One is the mechanical energy, the other is electrical energy, and third is thermal energy. मैकेनिकल एनर्जी जैसे विंड मिल्स या रैनकाइन साइकिल में यूज कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली जो फोटोवोल्टाइक सेल्स रहती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्मल एनर्जी जो भी हीट आ रही है हमारे पास सन से इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, that can be used into specific devices like solar cookers, dryers and so on. So we'll be having an overview of the different types of devices that can be used for using this solar energy. Number of applications here, just the solar water heater, space heating, air conditioning, refrigeration, drying, cooking, greenhouses, furnaces, desalination and electricity production.
हम सबका ओवरव्यू लेंगे। बेसिकली सोलर वाटर हीटर क्या होता है, इस तरह का एक पाइप होता है जो आपके घर के ऊपर इंस्टॉल होता है, जहाँ पे सोलर पैनल्स होते हैं जिसमें ये पाइप कनेक्टेड होता है। पाइप में वाटर सर्कुलेट करता है, जो सोलर एनर्जी आती है इस पैनल के ऊपर वो हीट अब्जॉर्ब करती है, हीट ट्रांसमिट करती है वाटर में जो इस पाइप से सर्कुलेट हो रहा है। देन अल्टीमेटली ये वाटर अवेलेबल हो जाता है हमारे पास टैंक में। इट एमिट्स द हीट, इसका जो हीट रहेगा हमारे टैंक के वाटर को एमिट करेगा और फिर कूल डाउन होकर वापस सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये वाटर हीटअप हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 डिग्री सेल्सियस का वाटर, दैट इज वार्म वाटर, हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है इस तरह के सोलर वाटर हीटर्स से। अगर समर सीजन रहेगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर और भी बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 80 to 90 डिग्रीज का वाटर हमें मिल सकता है सोलर वाटर हीटर्स से। तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन जिसमें पैनल्स में वाटर सर्कुलेट किया जाता है और उस हीट को हम अपने टैंक्स में सर्कुलेट करेंगे जिससे हमें हॉट वाटर मिलता है हाउसेस में। 10,000 डोमेस्टिक, 5,000 इंडस्ट्रियल एंड a lot of places जहाँ पे वाटर हीटर्स यूज हो रहे हैं, जैसे होटल्स, हॉस्टल्स, रेसिडेंसीज एंड इंडस्ट्रीज। numbers are growing on in India. सेकेंड, वी कैन यूज इट फॉर स्पेस हीटिंग, जिसमें दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव जिसमें सोलर रूफ पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। रूफ पॉन्ड बेसिकली क्या होता है, एक तरह का स्विमिंग पूल सॉर्ट ऑफ होता है जो रूफ पे बनाया जाता है। इट सॉल्व्स द पर्पस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। कैसे सॉल्व करेगा पर्पस, जब भी हमें यहाँ की अंदर, बिल्डिंग के अंदर की वार्म एयर अब्जॉर्ब करनी है तब हम इसको कवर कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि अंदर की जो हीट रहती है अब्जॉर्ब होके विद द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर वो एमिट कर देगा इस वाटर में। और जब हमें हीट रिलीज करनी है तब हम इसका कवर ओपन कर देंगे, तो यहाँ से हीट रिलीज हो जाएगी, दैट विल कॉज द कूलिंग इफेक्ट, जिससे इनर स्पेस की कूलिंग हो सकेगी। एंड इन केस ऑफ विंटर टाइम हम रिवर्स कर देंगे, हम इसको ओपन रखेंगे ताकि सन की रेडिएशन से इस वाटर को हॉट कर सके और वहाँ की जो हीट रहेगी उसे अब्जॉर्ब करके हम इनर एनवायरनमेंट ऑफ बिल्डिंग्स में ट्रांसमिट करेंगे ताकि हीटर की तरह एक्ट करें। एंड रिवर्स इज डन इन केस ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो विंटर्स में क्या होगा, वाटर को हम ओपन रखेंगे ताकि सन की रेडिएशन उसको वार्म कर सके और हीट एक्सचेंजर से अंदर के एनवायरनमेंट हीटअप हो सके इस तरह से। और समर में रिवर्स हो जाएगा, हम उसको क्लोज कर देंगे ताकि अंदर की हीट अब्जॉर्ब होकर वाटर में एमिट हो सके। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस सोलर रूफ पॉन्ड्स। पैसिव जिसमें जो लोकेशन डोर्स और विंडोज की है उस पर फोकस किया जाता है ताकि नेचुरल एयर कुछ इस तरह से फ्लो हो, वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सके, सर्कुलेशन अच्छा रह सके आपके होम्स में और इनर एनवायरनमेंट ऑफ बिल्डिंग्स में। एयर कंडीशनर एक और अप्लायंस है जिससे हम कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज its construction is very complicated, जैसे आप देख सकते हैं, there needs to be a solar collector, then there's a tank, then there's an auxiliary heater, chiller, cooling tower चाहिए, then उसको supply fan चाहिए जिससे वो heat transmit कर सके। So because of this complex design, it is not used much as compared to other devices. सोलर रेफ्रिजरेटर, सोलर बेस्ड पैनल्स होते हैं जो इस बैटरी को बैकअप करते हैं। यहाँ पे सोलर बेस्ड पैनल्स बेसिकली सन की रेडिएशन आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सोलर पैनल्स। ये इस तरह की बैटरी को चार्ज करता है और ये बैटरी फिर पावर अप करती है रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट्स को। दैट इज बेसिकली सोलर रेफ्रिजरेटर। सोलर ड्राइंग, जिसमें कुछ इस तरह के ट्रे होते हैं, परफोरेशंस होते हैं, होल्स रहते हैं, वेंट होल्स, देयर इज सम इंसुलेशन एंड देन जो भी हमें ड्राई करना है हम इसके अंदर लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको दिख रहा है डिवाइस, उसमें जो भी आपको ड्राई करना है, जैसे आपको ड्राई फ्रूट्स बनाने हैं, आपको पिकल्स बनाने हैं, एनीथिंग कैन बी ड्राइड इनटू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोलर ड्रायर। यहाँ पर इसके ऊपर एक ग्लास पेन लगा रहता है। ग्लास पेन क्या करता है, बेसिकली जो इंफ्रारेड रेडिएशंस रहती हैं उसको अंदर एंटर करने देता है लेकिन एस्केप करने नहीं देता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस और वार्मिंग रेडिएशंस, जिसकी वजह से अंदर जो एनवायरनमेंट रहेगा वो हीट अप हो जाएगा। हीट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ड्राइंग होगी वार्म कंडीशन में
जो मॉइस्चर रहेगा वो सूखता जाएगा एंड अल्टीमेटली ड्राइड थिंग्स आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर सोलर ड्रायर से। सोलर कुकर बहुत ज़्यादा फेमिलियर डिवाइस है जिसमें अगेन कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है कि अंदर ब्लैक पेंट कर दिया जाता है, जो भी यूटेंसिल्स आप जिसमें खाना पकाओगे उसको ब्लैक पेंट कर दिया जाता है, उसके ऊपर इस तरह के ग्लास पेन होता है एंड देन यहाँ पर मिरर होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, जब भी सोलर रेडिएशन आती है, सोलर रेडिएशन आती हैं, ये मिरर जो रहेगा सोलर रेडिएशन को सेंटर एरिया में फोकस करता है। सेंटर एरिया में ना यहाँ पे एक ग्लास कवर है, ग्लास कवर से सोलर रेडिएशन एंटर कर जाती हैं। दीज आर वार्मिंग रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस अब एस्केप नहीं कर पाती हैं, एंटर तो कर सकती हैं, बाहर नहीं निकल सकती हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट इसके अंदर जो भी फूड रहेगा वो अच्छी तरह से कुक हो सकेगा। ब्लैक इसलिए कवर किया जाता है ताकि मैक्सिमम हीट अब्जॉर्ब हो सके और टेम्परेचर अच्छा रह सके फूड को कुक करने के लिए। बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सोलर कुकर्स? इट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम इस तरह के सोलर कुकर्स को यूज नहीं कर सकते कुकिंग पर्पसेस के लिए, नाइट टाइम में यूज नहीं कर सकते हैं एंड चपातीस भी बना नहीं सकते हैं इस तरह के सोलर कुकर्स में। 2.25 lakhs ऑफ सोलर कुकर्स यूज हो रहे हैं इंडिया में। अदर थिंग इज द ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं? ग्रीन कलर के हाउस नहीं होते हैं। ग्रीन हाउसेस आर बेसिकली ग्लास हाउसेस। क्या करते हैं पर्पस? बहुत कॉमन टर्म है। ग्रीन हाउस क्या करता है? यस, रिस्पॉन्ड करिए। देखा आपने, ग्लास तरह के हट्स रहते हैं, उसके अंदर खूब सारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। दीज आर बेसिकली ग्लास हट्स, ग्लास के हाउसेस रहते हैं जिसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से की जाती है। इस तरह के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोलर रेडिएशंस रहती है इस ग्लास से एंटर कर सकती है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस, शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती है जो इस ग्लास के एस्केप नहीं कर सकती हैं, जिसके कारण जो there's this technical problem today, please bear with me. सो बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रारेड रेडिएशंस अंदर तो आ रही हैं लेकिन एस्केप नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो वार्म और ह्यूमिड रहता है और प्लांट्स की ग्रोथ जो रहती है वो ज़्यादा अच्छी होती है वार्म क्लाइमेट में। सो दीज आर कॉल्ड एज द ग्रीन हाउसेज, नॉट बिकॉज दे हैव अ कलर ऑफ ग्रीन बट बिकॉज जो हट्स होती हैं ये ग्लास की रूफ्स होते हैं और यहाँ पे ग्रोथ रहती है प्लांट्स की बहुत अच्छी। दूसरा द अदर डिवाइस इज द सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेस बेसिकली क्या होता है? जो हमें हाई टेम्परेचर अचीव करने में हेल्पफुल होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2000 to 3000 डिग्री सेल्सियस। दीज आर कॉल्ड एज फर्नेसेस। फर्नेसेस स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे सिरेमिक्स की टेस्टिंग के लिए एंड अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सोलर फर्नेस बेसिकली कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे मिरर्स हैं, ये मिरर्स सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं इनटू दिस सेंट्रल रीजन। दिस कर्व सॉर्ट ऑफ थिंग इज अगेन हैविंग सोलर कलेक्टर्स। सोलर कलेक्टर्स फोकस करेंगे इस जो भी सोलर रेडिएशंस आ रही हैं उसको सेंट्रल रीजन में। सेंट्रल रीजन में दिस इज द फर्नेस जहाँ पे हाई टेम्परेचर अचीव हो सकता है 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस का। सो दैट इज बेसिकली हाउ इट वर्क। जिस तरह से दिखता है सोलर फर्नेस, सोलर रेडिएशन को फोकस किया जाता है और इस तरह का सी एरिया जो रहता है सोलर कलेक्टर रहता है। सोलर कलेक्टर सोलर रेडिएशन को सेंट्रल एरिया में फोकस करेंगे। दिस इज द फर्नेस वेयर हाई टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड। Now, these are basically used for manufacturing of aluminum crucibles and to study properties of ceramics and refractory materials.
डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने डिज़ाइन किया है सोलर फर्नेस that can generate temperature of 2000 degrees Celsius and it is used for surface hardening of steel and cast iron. Desalination जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है हमें सॉल्ट रिमूव करना है सॉल्टी वाटर से. सॉल्टी वाटर कहाँ मिलता है? ओशन और सीज में मिलता है. दैट इज बेसिकली डन इन केस ऑफ ओशन एंड सी एरियाज. It can be done with the help of solar desalination device also called as solar still. कुछ इस तरह का हट होता है. यहाँ पे एक ग्लास पेन लगा रहता है. वाटर जिससे हमें सॉल्ट सेपरेट करना है उसको नीचे इस ट्रफ में रखा जाता है. सोलर रेडिएशन एंटर कर जाती हैं एंड एज ऑलरेडी डिस्कस्ड ग्लास क्या करता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस को एस्केप करने से रोकता है जिसकी वजह से इनर एनवायरनमेंट जो रहेगा वो वार्म होता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है. अब वार्म रहेगा तो उसकी वजह से वाटर क्या रहेगा? वेपराइज करेगा और यहाँ पर इनर सरफेस ऑफ ग्लास में ड्रॉपलेट्स की तरह इकट्ठा होने लगेगा और फिर ये ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं वो इस ट्रफ में ड्रॉप होने लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन. स्लैंटिंग कंस्ट्रक्शन की वजह से जो भी वाटर आएगा वो यहाँ पर ड्रॉप होगा तो वाटर यहाँ पे escape आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. पीछे जो रह जाएगा दैट विल बी सॉल्ट. दिस इज एक्चुअली अ मॉडल ऑफ सोलर स्टिल जिसे हम डीसैलिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं. यहाँ पे ग्लास पेन है और अंदर एरिया दी हुई है वाटर रखने के लिए जो सॉल्टी वाटर रहेगा. 10,000 सोलर स्टिल्स यूज किए जा रहे हैं इंडिया में. We can use solar energy for production of electricity in two ways. One is solar thermal, the other is solar photovoltaic. Solar thermal में तीन options हैं हमारे पास: parabolic trough, parabolic dish and continuous tracking systems, also called as heliostats. Parabolic trough कुछ इस तरह से होता है. यहाँ पे mirrors होते हैं. जो भी सोलर एनर्जी आती है ये मिरर्स से रिफ्लेक्ट होकर सेंट्रल पाइप में फोकस की जाती है. ये पाइप में वाटर सर्कुलेट करता रहता है. अब क्योंकि सोलर एनर्जी आ रही है वाटर जो रहेगा उसकी हीट अब्जॉर्ब करेगा. वी विल हैव हॉट वाटर. उस हॉट वाटर से हम एक लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड को वेपराइज करेंगे. दैट इज कनेक्टेड टू अ टर्बाइन. वेपर्स टर्बाइन को रोटेट करेगा. टर्बाइन से जनरेटर कनेक्टेड है एंड दैट लीड्स टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग पैराबोलिक ट्रफ टेक्नोलॉजी. कुछ इस तरह से दिखते हैं पैराबोलिक ट्रफ्स. मिरर्स हैं. This focus the solar radiation into the central areas. Then we have parabolic dish. जैसे आपकी टाटा स्काई डिश होती है सिमिलर रहती है पैराबोलिक डिश. यहाँ पे अगेन मिरर्स लोकेटेड होते हैं. सोलर रेडिएशन से यहाँ पे मिरर पे फॉल होगी वो फोकस करेगा इस सेंट्रल रीजन में. सेंट्रल रीजन में हीट एक्सचेंजर होता है जो इसकी हीट अब्जॉर्ब करता है. दैट इज यूज्ड फॉर हीटिंग अ लिक्विड दैट इज देन कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. ऐसे दिखता है पैराबोलिक डिश. कंटिन्यूअस ट्रैकिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज हीलियोस्टैट्स. अब ये कैसे डिफर करते हैं? प्रीवियस केस में हमने देखा कि जो पैराबोलिक ट्रफ और डिश थे वो फिक्स थे. दे आर नॉट मूविंग. सोलर रेडिएशन आएगी तो ही वो वर्क करेंगे. उनके ऊपर फॉल करेगी तो ही वो वर्क करेंगे. बट इन दिस केस ऑफ कंटिन्यूअस ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है? ये जो मिरर्स रहते हैं वो सन के साथ साथ मूव हो सकते हैं. जैसे जैसे सन मूव करेगा ईस्ट टू वेस्ट उसके साथ साथ ये मिरर्स की पोजीशन चेंज होती जाएगी. तो क्या करते हैं ये मिरर्स जब भी सोलर रेडिएशन उस पर फॉल करती है वो फोकस करेंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल टावर. इस टावर में हमारे पास जो भी लिक्विड रहेगा वो हीट अप हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशंस. That gets converted into steam. That steam is used to rotate turbines and then turbines are connected to electromagnets for electricity production. कुछ इस तरह का वो दिखता है सोलर थर्मल पावर प्लांट जिसमें हीलियोस्टैट बेस्ड है जिसमें जो मिरर्स रहते हैं सन्स के साथ साथ वो मूव करते हैं. कंटिन्यूअस ट्रैकिंग सिस्टम उसे कहा जा रहा है बिकॉज दे कैन चेंज द एंगल विद द मूवमेंट ऑफ द सन एंड अल्टीमेटली जो सोलर रेडिएशन रहेगी वो सेंट्रल टावर में फोकस की जाएगी. That will lead to that heating up of the liquid and that helps in electricity production. Now India में सोलर थर्मल पावर प्लांट है 22 kilowatts की कैपेसिटी का in Andhra Pradesh, Solajipalli village that is using steam turbines for electricity generation. Another 50 kilowatt capacity is in Gurgaon, Haryana and 35 megawatt capacity is in Maithana, Jodhpur, Rajasthan.
सोलर फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल्स होते हैं जिसमें सनलाइट फॉल करती है और फॉल होते साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है. दिस हैज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जिसमें एन पी एन जंक्शन होता है. दिस इज द पी एन जंक्शन. One layer of n type semiconductor, the other layer of p type semiconductor. पीएन जंक्शन जिसमें क्या होता है जैसे ही सोलर रेडिएशन फॉल करती है इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं फ्रॉम p type to the n type. Because of this flow of electrons there is production of electricity. This is basic construction of a solar cell. सोलर सेल में सिलिकॉन बेस्ड पी टाइप होता है और एन टाइप होता है जिसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. This is how a solar cell looks like in action. Number of solar cells combine करके solar panel बनाया जाता है. Approximately 40 to 50 cells मिलके ही एक solar panels बनते हैं. That can be located on top of the surface of this building and that absorbs the solar radiation, leads to electricity generation. One of my students had gone to IIT Rajasthan. That was around a decade. So my student had gone to IIT Jodhpur, where at that time, 10 years back, solar panels से electricity requirement fulfill करना was a big thing. So पूरा जो IIT जोधपुर की requirement थी उस building की वो पूरी solar panels से fulfill की जा रही थी. This was the picture regarding. Photovoltaic systems are in the developing stage. Number of rural areas में electricity requirements को fulfill कर रहे हैं. Solar pond बेसिकली जो वाटर रहता है पॉन्ड में उसकी सैलिनिटी वेरी करती है. ऊपर के रीजन में फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है जिसका सॉल्ट कंटेंट लो होता है. जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं उसका सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है. दिस वेरिएशन इन सॉल्ट कंटेंट causes the ability of this water to absorb and retain heat. तो जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट रहेगा वहाँ पे ज़्यादा हॉट रहेगा वाटर, जहाँ पे कम सॉल्ट रहेगा वहाँ पे रिलेटिवली कोल्ड रहेगा वाटर. दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सोलर पॉन्ड. सोलर पॉन्ड में क्या हो रहा है क्योंकि हमारे बॉटम में सॉल्ट ज़्यादा है और सरफेस पे सॉल्ट कम है तो बीच का जो रीजन रहता है वो एक इंसुलेशन जोन की तरह एक्ट करता है जिसमें जो हीट आती है यहाँ पर बॉटम में ट्रैप हो जाती है. हॉट वाटर अवेलेबल रहता है इस पॉन्ड में एंड इस इंसुलेशन की वजह से वो ऊपर नहीं जा पाता है. नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि वार्म वाटर लाइट होता है वो ऊपर फ्लोट कर जाता है. बट बिकॉज यहाँ पे हम सॉल्ट कंटेंट वेरी कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा है बॉटम में तो वो हीट अब्जॉर्ब करके वहीं पर ट्रैप हो जाता है इस इंसुलेशन जोन की वजह से. एंड देन दैट हॉट वाटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. कैसे? यहाँ पे हॉट वाटर है. इस हॉट वाटर को हम लेकर जाते हैं एक लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की तरफ. जो लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड लोअर टेम्परेचर पे ही वेपराइज हो जाएगा. वेपर्स फिर टर्बाइन रोटेट करेंगे. टर्बाइंस के साथ जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और फिर इस लिक्विड को दोबारा कंडेंस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कोल्ड वाटर जो अपर सरफेस में है एंड देन कंडेंस करके इसको रिसर्कुलेट किया जाता है. इस तरह से एक चेंज चलती जाती है. तो हॉट वाटर फॉर हीटिंग अप द लिक्विड, कोल्ड वाटर अपर सरफेस फॉर कूलिंग इट. इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं.
Yes, India was the first Asian country जहाँ पर इस तरह का सोलर पॉन्ड बनाया गया था भुज गुजरात में that had the ability to supply 220 lakh kilowatt hours of thermal energy per annum per year, 1,25,000 kilowatt hours of electricity per annum, and about 80,000 liters of potable water per day. Potable means जिससे हम ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं. This is a view of the solar pond at Bhuj. That was regarding solar energy. Do you have any doubts? कोई doubts हैं आपके? No, ma'am. I hope the topic was clear. आज दोनों जो topics हमने discuss किए वो clear है आपको? So shall we see a visual? Okay, take the natural heat from the sun, reflect it against a mirror. Focus all of that heat on one area, send it through a power system, and you've got a renewable way of making electricity. It's called concentrating solar power, or CSP. Now, there are many types of CSP technologies: towers, dishes, linear mirrors, and troughs. Okay, have a look at this parabolic trough system. Parabolic trough. We've already discussed कैसे solar energy को हम use कर सकते हैं electricity production के लिए. This is an example of a parabolic trough system. Troughs are large mirrors shaped like a giant U. These troughs are connected together in long lines and will track the sun throughout the day. When the sun's heat is reflected off the mirror, the curved shape sends most of that reflected heat onto a receiver. The receiver tube is filled with a fluid. It could be oil, molten salt, something that holds the heat well. यहाँ पे जो भी liquid रहता है वो heat up हो जाता है solar radiations की help से, and that is then further converted into steam that rotates the turbines. Basically, this super hot liquid heats water in this thing called a heat exchanger, and the water turns to steam. Now the steam is sent off to a turbine, and from there, it's business as usual inside a power plant. A steam turbine spins a generator, and the generator makes electricity. Once the fluid transfers its heat, it's recycled and used over and over. And the steam is also cooled, condensed, and recycled again and again. ये सारी process हम समझ चुके हैं. Again it is repeating. One big advantage of these trough systems is that the heated fluid can be stored and used later to keep making electricity when the sun isn't shining. Sunny skies and hot temperatures make the southwest U.S. an ideal place for these kinds of power plants. Many concentrated solar power plants could be built within the next several years. And a single plant can generate 250 megawatts or more, which is enough to power about 90,000 homes. That's a lot of electricity to meet America's power needs. That was regarding the solar energy that can be used for electricity generation. We'll see a brief view of solar photovoltaics. All right, we all know that the sun's energy creates heat and light, but it can also be converted to make electricity, and lots of it. One technology is called solar photovoltaics, or PV for short. You've probably seen PV panels around for years, but recent advancements have greatly improved their efficiency and electrical output. Enough energy from the sun hits the Earth every hour to power the planet for an entire year. Here's how it works. You see, sunlight is made up of tiny packets of energy called photons. These photons radiate out from the sun, and about 93 million miles later, they collide with a semiconductor on a solar panel here on Earth. Basically, ये जो solar panels होते हैं वो semiconductor material से बने होते हैं. जब भी light इस पर fall करेगी, these light packets are called as photons. When they fall upon this device, that leads to generation of electricity. It all happens at the speed of light.
Take a closer look, and you can see the panel is made up of several individual cells, each with a positive and a negative layer. I already told you that silicon is well established material for making this type of solar panels. Silicon में एक N type and P type semiconductors होते हैं, जिसमें एक जगह excess electron होगा, दूसरी जगह holes होंगे, जिसकी वजह से ये electrons move करेंगे whenever light falls upon the surface of these collectors, which create an electric field. It works something like a battery. So the photons strike the cell, and their energy frees some electrons in the semiconductor material. The electrons create an electric current, which is harnessed by wires connected to the positive and negative sides of the cell. The electricity created is multiplied by the number of cells in each panel and the number of panels in each solar array. Combined, a solar array can make a lot of electricity for your home or business. Although it can provide a lot of electricity for homes and businesses, but the only challenge is we require a lot of area. Area बहुत ज़्यादा required होती है इस तरह के energy को tap करने के लिए. This rooftop solar array powers this home, and the array on top of this warehouse creates enough electricity for about 1,000 homes. Okay, there are some obvious advantages to solar PV technology. It produces clean energy. It has no emissions, no moving parts. It doesn't make any noise, and it doesn't need water or fossil fuels to produce power. And it can be located right where the power is needed, in the middle of nowhere, or it can be tied into the power grid. Solar PV is growing fast, and it can play a big role in America's clean energy economy. Anywhere this... A lot of advantage of this technology, emissions reduce हो जाते हैं, environmental effects reduce हो जाएंगे, one-time installation है, it is accessible anywhere, but then there are certain challenges as well of each technology. So far, I hope दोनों topics clear हैं आज के, geothermal energy as well as solar energy is clear. I think it's time for attendance today. If you have any doubts, आप लोग पूछ सकते हैं. Attendance आंसर करिए. आशीष, आदित्य, आशीष is present. आदित्य, Present, ma'am. अंकुश, Present, ma'am. अंश, Present, ma'am. अंशुमन, Present, ma'am. अपूर्व, Anshuman, present, ma'am. अपूर्व, आर्यन, असगीर, आशुतोष, अथर्व. I need to take this call. जी सर. Okay, sorry for disturbance. अथर्व, आयुष,
Ayush Thakur, Badal. मैम Badal is present. मैम अब्दुल हुआ 6 प्रेजेंट में मैम वो माइक ओपन नहीं हुआ Okay. Badal is present. Bharat, Bhumika, Chetan, Deepak, Dipendra, Dinkar, Farhan, Garv, Bushri, Harsh, Hemant. Present, ma'am. Harsh is present. Hemant is present. Himanshu, Hitesh, Khushi. Khushi is present. ma'am. Kuldeep, Kumkum, Manjri, Mohammad, Mohit, प्रेजेंट मैम Nitesh, Parth, Parth Yadav, Pawan, Pooja, Pradeep, Pratik, Priyanka, Ritik, Sawan, Shadab, Sutakshi, Sheikh, Mohammad, Shivam, Shubham, Siddhant, Siddharth, Tanishq, Tushar, Umesh, Urvashi, Ma'am, Urvashi present. विजय, विकास और यश ने आपका अटेंडेंस मार्क कर दिया है. मैम विजय चौहान प्रेजेंट. यस, विजय चौहान 57, मैम यश प्रेजेंट. विकास 59 एंड यश 63. तीनों का अटेंडेंस मार्क कर दिया मैंने. किसी का छूट गया है तो बताइए. मैम मैम सताक्षी. आशीष तुम मैम बोलिए. मैम आशुतोष मीना और शताक्षी शर्मा की छूट गई है, उनके माइक ओपन नहीं हो रहे, नेटवर्क इशू है कुछ. हाँ, सताक्षी का मैंने लगा दिया. आशुतोष का मैं लगा लेती हूँ. और कोई छूट गया? Anybody else was left out? Alright, thank you for today. We will Thank you, meet ma'am. next class. थैंक यू मैम. अगर आपको डाउट है कुछ भी तो पूछिएगा. I'll be sharing the video links. ओके मैम.